Welcome to Intellect, and in this class we are going to discuss about comparative public administration, and it is just an introduction to comparative public administration. You know that the study or the comparative study of public administration started basically in 60s, or you can say from the late 50s it was started. But it gained momentum in 60s and finally in 70s when Riggs, who was the appointed as the chairperson of the comparative study group, CAG. So, why this comparative study was needed? First question. Second question arises, what kind of role was played by the administrative theories, or you can say the administrative philosophy, which was developed in the Western countries, Europe and America? And what were the reasons why they failed, why they didn't provide the same result as they were providing, same result in the developing countries or the third world countries as they were providing or they were giving in the Western nations. That will also be discussed. Thereafter, we will discuss in the introduction itself that what are the approaches that were adopted in the study of comparative public administration. And thereafter, we'll go further, or we will go ahead with the role of the Weberian philosophy or the Max Weber in the comparative public administration. Most of the students do not think that Weber has played any role in the comparative public administration, and finally the Riggs. And actually, in the comparative public administration, this is all that you need to study. Okay, चलिए तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं. So as we know that the comparative public administration as a separate field of study of administration started in the 60s and got momentum in the 70s. Why this started? Why it was needed? So the reason was very simple, that the issues related with the third world countries were so complex and different from the Western countries that the administrative philosophy and administrative theories which were developed in Western countries were not found suitable in the third world countries, which are also called as developing countries. अब रीजन क्या था? What were the crux? Why the Western model was not found successful in the third world countries? So the scholars say that it is due to the difference in the national and cultural setting. नेशनल और कल्चरल सेटिंग जो है, नेशनल सेटिंग और कल्चरल सेटिंग जो है, उसमें जो डिफरेंसेस थे या जो डिफरेंसेस अभी भी पाए जाते हैं, उसके कारण दैट इज द रीजन व्हाई वेस्टर्न मॉडल वाज नॉट फाउंड सक्सेसफुल. अब इसमें बात आती है कि भाई क्यों ऐसा हुआ? तो जरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आप देख लो, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो. So almost all the third world countries, in fact all the third world countries were the colonies of the Western societies or the Western countries. Resources were exploited by the colonies. Resources were exploited by the
imperialistic governance or the administration. Society was very less educated, and the scholars said, or scholars say, that these were some other reasons why, and these were the some other reasons why Western model found unsuccessful. अब जरा देखिए कि दिस इज आल्सो द रीजन व्हाई व्हेन मिस्टर रिक्स, मैं यहां आपको ले आ रहा हूं, व्हेन मिस्टर रिक्स कैटेगराइज द सोसाइटीज, he categorized the societies initially in two but finally in three type of societies, जिनको आप लोग जानते हो, fused, prismatic and diffracted. इनिशियली जब उन्होंने एक और दिया था तो उन्होंने कहा था अग्रेरिया, इंडस्ट्रिया, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, अग्रेरिया, ट्रांजिसिया और इंडस्ट्रियल. तो एग्रेरियन सोसाइटी मींस एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी जो रहेगा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा इंडस्ट्रियल के. और यूरोप और अमेरिका इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थे, डेवलप्ड सोसाइटीज थे. तो ये जो एक नेशनल सेटिंग है इसमें फर्क हुआ और कल्चर भी डिफरेंस हो जाता है. सो कल्चरल डिफरेंसेस वर आल्सो देयर. ओके, तो ऐसे में अब क्या हुआ कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सेपरेटली पढ़े जाने यानी कि स्टडी करने यानी कि रिसर्च और इनोवेशन के लिए इसका काम शुरू हुआ. एंड यू नो दैट द फोर्ड फाउंडेशन हैज गिवन द फंड इनिशियली. अब जरा देखिए एक स्टोरी है इसके पीछे भी. फोर्ड फाउंडेशन फंडेड द comparative administrative group which was responsible for the comparative study, and that comparative study was basically related with the third world countries. So why Ford Foundation funded? There might be several answers, but the one very important reason was that the US wanted that the newly independent countries should not adopt communist philosophy. They should not be or become a communist state. तो फोर्ड फाउंडेशन आप सब समझ रहे हैं यूरोपियन फाउंडेशन है, तो फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से जब उसे फंडिंग की गई तो एक ये भी रीजन था कि टू चेक द कम्युनिज्म. कम्युनिज्म को भी साम्यवाद को भी चेक करना एक बड़ा उद्देश्य तो था ही था. लेकिन कोई बात नहीं. तो चलिए जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो ध्यान रखिए हम लोगों ने बात कहां से शुरू की है कि नेशनल और कल्चरल सेटिंग में डिफरेंस है. इसका मतलब जो इकोलॉजी है, द इकोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इज डिफरेंट एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इकोलॉजी इज डिफरेंट, एंड द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट मैचलेस. कोई मैच ही नहीं. और उस जमाने में तो और ही मैचलेस. आज तो थोड़ा एडवांसमेंट भी हुआ है, जस्ट थिंक अबाउट 60s and 70s. तो बहुत मैचलेस डिफरेंस था. वो हाईली एडवांस हो चुके थे और यहां अभी भी हल से खेती होती थी, ट्रैक्टर भी ठीक से नहीं थे. So in the study there will be definitely the ecological approach. तो पहला तो हो गया अप्रोचेज ऑफ स्टडी में इकोलॉजिकल अप्रोच विच वाज अडॉप्टेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाय द रिक्स इन द एनालिसिस ऑफ द सोसाइटीज एंड हिज एडवोकेसीज. सिमिलरली structural functional approach is also the part of the comparative public administration, and structural functional approach, second approach, structural functional approach was developed basically by, or you can say made advanced basically by the
Talcott Parsons, a sociologist. तो इकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है? तो इकोलॉजिकल अप्रोच कहता है कि एक जो इकोलॉजी होती है वो क्या करती है, वहां के जो है ऑर्गेनिक चीजों को डेवलप करने में मदद करती है। इकोलॉजी, इकोलॉजी पर पूरा का पूरा प्राणी निर्भर करता है। तो इकोलॉजी जो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, अगर डिफर करेगी तो वही चीज वहां हो जाएगी। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ये कहता है कि a particular kind of structure found in any particular society performs a kind of particular function. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो गया। इसके बाद है जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग, कि मॉडल जो तैयार किए जाते हैं। तो तीसरा अप्रोच इज, द थर्ड अप्रोच इज जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग। And always remember that Ricks has adopted all these three approaches in his study, and what happens, sometimes students do not know what the where he has applied the structural functional approach, where Ricks applied the general system model building, and if the question is asked by the UPSC, then they face a big challenge how to write, लिख नहीं सकते आंसर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है। अब जो है रिक्स ने इन तीनों को अप्रोच को अपनाया या अप्लाई किया अपनी स्टडी में, और फिर दिया फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक्स और फिर डिफ्रैक्टेड, और फिर प्रिज्मेटिक साला मॉडल पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया, विच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जरा देखिए, ये भी स्कॉलर्स ने बता दिया। अच्छा, वेबर का क्या रोल है? आप ध्यान दीजिए, व्हेन द कंपैरेटिव स्टडी स्टार्टेड बाय मिस्टर रिक्स, so he said that the administration of this country is like this lacks this, डेवलपिंग कंट्रीज में ये कमियां पाई जाती। तो क्या हुआ कि वट एवर हैज बीन गिवन बाय मिस्टर मैक्स वेबर, दैट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट टू कंपेयर। So the whenever and wherever there will be any comparison of the bureaucracy, Mr. Weber will be there as a starting point. Means Weberian ideology एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में रोल प्ले करती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो वेबर को भी कंपैरेटिव स्टडी के साथ पढ़ना पड़ता है, और जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें रिक्स एंड वेबर हैव सेड सिमिलर, सेम, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं था दोनों की आइडिया में। जैसे विल्सन का और वेबर का मिलता जुलता है, मैंने आपको बताया था। और फिर तो कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे इन द अर्ली स्टेज और इन द अर्ली स्टडीज। तो अर्ली स्टडीज में सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी में किसका नाम आता है? तो वुडरो विल्सन आते हैं। वुडरो विल्सन हैज सजेस्टेड दैट देयर शुड बी कंपैरेटिव स्टडी। जब उन्होंने कहा कि वी कैन बोरो द टेक्निक ऑफ शार्पनिंग द नाइफ बट वी विल नॉट टेक द इंटेंशन ऑफ मर्डर। तो वो बात क्या थी कि हम विदेशों से अपना ज्ञान ले सकते हैं, मतलब क्रॉस नेशनल अगर कुछ अच्छा है देन आई कैन टेक, वी कैन टेक। So that is actually the comparative element in the Wilsonian idea. So here ये चीज हो जाएगी। और उसके बाद आप देखिए कि फाइनली स्कॉलर्स और एक चीज बता देते हैं, वो कहते हैं कि वेस्टर्न मॉडल फेल क्यों हुआ। तो कहते हैं कि द वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट मॉडल, द वेस्टर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और the administration based on the Western model was found unsuccessful in the third world countries because they were ethnocentric. Ethnocentric means were related to the particular society, and that was the Western society.
नो वन एल्स। और फिर क्या हुआ? ऑल द स्कॉलर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन of the Western societies have claimed that their principles and theories are applicable universally, but in practice it was not found. ठीक है? And all the scholars have claimed that the universal application of the theories and principles is beyond the ecological setting. वो भी रॉन्ग हो गया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि, और आप एक और चीज देखिए कि किसी ने एम्पिरिकल स्टडी ही नहीं की थी। It was the behavioral scholars who have studied empirically. सबका स्टडी ही नॉर्मेटिव था। तो बिफोर बिहेवियरल स्टडीज देयर वाज नो एनी real study or the empirical study. And perhaps this was the reason why in 1947 Mr. Robert Dahl has raised science of public administration 3 problems, and one of the problems problem was one problem was among those 3 problems that until unless the study of public administration is not made comparative, its claim for science sounds rather hollow. तो 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपनी राइटिंग में क्या कर दिया? अपनी राइटिंग में कंपैरेटिव स्टडी की वकालत की, डिमांड की, और ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगी तब तक साइंस नहीं बन सकता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दीज ऑल आर द इश्यूज which we need to discuss in the study of comparative public administration। और एक बात और जान लीजिए कि जब कंपैरेटिव स्टडी होगा देन रिक्स आएंगे, और रिक्स कहते हैं कि हम कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे, तो कहते हैं कि देयर विल बी 3 शिफ्ट। और वो कौन कौन से होंगे? तो थोड़े से उनके अपने टेक्निकल टर्म्स हैं। देयर विल बी शिफ्ट फ्रॉम इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, normative to empirical, and non-ecological to ecological. And remember that when Ricks is saying these 3 things means there will be 3 shift। तो ऐसे समझ लो कि जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो उसने कहा था दीज विल बी द शिफ्ट, तो वैसे ये आ रहा है, कह रहा है कि देयर विल बी 3 शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर दिस कंपैरेटिव स्टडी the studies were of what kind? So studies were idiographic, studies were normative, and studies were non-ecological. So these things should always be remembered when you study this topic, comparative public administration. And this is a very brief introduction of comparative public administration. I think you have got your answers and your doubts are now clear. And if there is any, you can write to me for your clarification, doubt clearance, and enjoy. And anyone who wants to join can join me. Thank you. Thank you. Thank you for today.